Alright students, the topic for today's lecture is deadlock. In layman's term, what is a deadlock? A deadlock is a condition where the system cannot proceed any further. All the processes are stalemated. But in computer engineering term, a deadlock is a condition where a set of processes are waiting for an event to occur and each event can only be caused by another process belonging to the same set. Sounds complex, but not really. Actually, in deadlock, suppose there are two processes P1 and P2. They both need some resources to complete their work. Resources could be a CD writer, a printer, a scanner, memory, file, pen drive, anything could be a resource. So P1 needs R1 and R2 resources to complete its task. Similarly, P2 also need both these resources to execute properly. Now, since P1 gets the CPU first, P1 makes a request for resource R2 and it is allocated that resource. Meanwhile, P2 also needs resource R1 and R2, but for the sake of argument, let's say P2 makes a request for resource R1 first and it is allocated that resource. Kindly keep in mind the direction of the arrows as they are very important. A arrow originating from P and terminating to R is known as a request edge. A process P is requesting for resource R. Process Pi is making a request for resource Ri. On the other hand, if a arrow or an edge originates from a resource and terminates to a process, it is known as an assignment edge, meaning that particular resource has been allocated or assigned to that particular process. So coming back to our question, the resource R2 has been allocated to process P1. Similarly, R1 has been allocated to process P2. After some time, say 2 seconds, 2 minutes or 2 hours, process P1 needs resource R1. But R1 resource has already been allocated to process P2. So it makes a request for R1 but cannot be granted immediately. So it has to wait. At the same time, P2 process also needs resource R2, and since R2 has already been allocated to P1, it cannot be granted to P2 immediately. This condition is called deadlock because both processes are waiting for an event to occur, like P1 is waiting for R1 to become free, and R1 resource has been allocated to process P2, which in turn is making a request for resource R2. So both the processes are waiting for an event to occur. In this case, the event is the becoming free of a respective resources, and both the processes are waiting for other process to complete its task. In nutshell, P1 process can only execute further if P2 completes its task first. First P2 will complete its task, only then P1 can execute. On the other hand, P2 process is also waiting for P1 process to complete its task. Both the processes are waiting for each other and they cannot proceed any further. This is a classical example of a deadlock where two or more processes are waiting for some event to occur. Minimum 2 processes are required for a deadlock to occur, and it could include in the worst case hundreds of processes in a large computer system. Coming back to this example, as I said earlier, this is known as a assignment edge. This resource R1 has been allocated or assigned to process P1. Similarly, this edge is known as request edge because process 1 has requested the resource number 2. It cannot be allocated immediately because some other process is using it. So this is a classical example of deadlock. Now in a computer system, why would a deadlock ever occur? Or what are the conditions that are necessary for a deadlock to occur? Let's see. There are mainly 4 conditions that are necessary for a deadlock to occur. If all the 4 conditions are true simultaneously, then only a deadlock will occur.
The first condition being mutual exclusion. Mutual exclusion states that the resources that are involved in a deadlock must be mutually exclusive. On what does it mean? That these resources are non-shareable. It can only be used by one process at a time. Coming back to the previous example, this resembles a deadlock because resource 1 and resource 2, both these resources can only be used by one process at a time. In this example, resource 1 has been allocated to process 1 and resource 2 has been allocated to process 2. Only one process at any given time is making the use of that resource. So these resources are mutually exclusive. These resources are mutually exclusive, non-shareable. Only one process can use them at any given point of time. So this is the first condition for a deadlock to occur. Second, what is the second condition? The second condition is the hold and wait condition. It implies that process must hold some resource and must be waiting for some other resources. Let's go back to the previous example. In this case, process P1 is holding which resource? R1 resource, and it is waiting for another resource, namely R2. So it is under hold and holding this resource and waiting for this resource. So this process is holding the resource and waiting for another resource simultaneously. It is doing both the things. Moving on to process 2, it is also in the similar situation. Let's see how. Resource 2 has been allocated or assigned to process 2. So it is holding this resource R2 and it is waiting for another resource to become free. So this is also in the hold and wait condition. For a deadlock to occur, some of the process or all the process have to be in the hold and wait condition, holding a resource and waiting for some another resource to become free. Second condition is this hold and wait condition. Third condition is no preemption. No preemption means whenever we allocate a resource to some process, we cannot take that resource back from it without moving it to some other state. Let's see in our example how good it would have been if resources once allocated to a process could be taken back. In this example, resource 2 has been allocated to P2, and after some time we feel the system is not executing properly. We could take this resource and give it to another process. It would complete its task and then we can allocate both the resources to process 2. But it doesn't work that way, because for a deadlock to occur, the resources must be non-preemptive. Once they have been allocated to some process, they cannot be taken back at any time. It will complete its execution or it will exit voluntarily. We cannot take that process without moving it to some another state. So non-preemption condition is also a basic condition for deadlock to occur. Non-preemption. The resources once allocated cannot be taken away from that process until a process voluntarily releases it. And when will it voluntarily release? It will release it voluntarily when it has completed the execution or its execution is no longer required. So it will terminate itself. Moving on to the last condition. The last condition is the circular wait condition. A cycle must be formed. A cycle must be formed for a deadlock to occur. In this case, we could see that a cycle is being formed. Follow the direction of the arrows from here to here, from here, and coming back to here. So a cycle is formed, and the cycle is necessary for a deadlock to occur. Let's see once again. P1 is requesting R1. R1 has been allocated to P2. P2 in turn requests for R2, and R2 has been allocated to P1. This is a deadlock condition because all the two processes, both the processes and both the resources are mutually exclusive. Resource R1 and R2 are being used only by one process at a time. R1 is being used by P2 and R2 is being used by P1. So mutual exclusion is holding here. Mutual exclusion is true here. We
moving on to the second condition, hold and wait condition. Let's see if this is also holds true. P1 is holding resource R2 and waiting for R1. P2 is holding resource R1 and waiting for R2. So P1 is also in the hold and wait condition. P2 is also in the hold and wait condition. So this would mean that hold and wait is true. So hold and wait also holds true. Third condition, non-preemption. The resources that are allocated once cannot be taken back forcefully. It has to be released voluntarily by the process. So R1 and R2, once we have allocated them, we cannot take them forcefully. So we are not taking them forcefully. It would mean that non-preemption exists. So non-preemption also holds true. And circular wait. P1 to R1, one of the edge, second edge R1 to P2, third edge P2 to R2, and fourth edge R2 to P1. This would mean that a cycle is being formed. Follow the direction of the arrows and you could clearly see a cycle is being formed. So circular wait also exists. As we said earlier, all the four conditions must have to be true simultaneously. At any given point, all the four conditions are true, then only deadlock will occur. Look simple. What would be the chance that four conditions are true simultaneously? But all these four conditions are very closely related to each other. One of the condition will automatically cause the other three conditions to occur, and similarly removing one will automatically break the other conditions. So deadlock, for a deadlock to occur, repeating again myself, for a deadlock to occur, all the four conditions will have to be true simultaneously. So can we remove a deadlock? Because four conditions look quite a big challenge. So are there any conditions, are there any methods where deadlock could be made to be prevented, or could we prevent a deadlock? So coming on to the first method to handle deadlocks. Method to handle deadlocks. There are number of methods that shows us how to handle deadlock. Deadlock could be prevented, deadlock could be avoided from entering the system, deadlock could be ignored, that a deadlock would never be occurring in our system, so we could ignore it. Or there is another method to handle deadlock, that we could allow the deadlock to occur and then we could detect it and remove it. But the first method to handle deadlock is deadlock prevention. I don't want this deadlock condition to occur and to enter my system, because it will decrease the CPU utilization and will waste my time. Also, the resource will not be optimally used. So I don't want deadlock to occur in my system. So what can I do? I can prevent the deadlock from occurring. Remember, as I said earlier, all the four conditions have to be true for a deadlock to occur. And if I don't want deadlock to enter my system, all I have to do is break one of the condition. If one of the condition is false, remaining three conditions, even if they are true, will not lead to a deadlock, because four conditions simultaneously have to be true. So all I have to do is break any one of the condition. Sound simple? चलिए देखते हैं आगे. So deadlock prevention needs to be carried out. So the first thing that I can do is decide which condition to break. We don't have to make false all the four conditions. Breaking a single condition will lead to deadlock removal, or in fact not removal, absence of deadlock. So the first try that I do is breaking the mutual exclusion condition, or in computer language, attacking the mutual exclusion condition. I am attacking the condition where the resources have to be mutually exclusive. If I can successfully do that, successfully guarantee that, remaining conditions will not matter, because this condition will become false. And as I said earlier, a single condition becoming false will lead to deadlock not occurring in my system. So how can I guarantee that mutual exclusion does not occur? How can I guarantee that? I can guarantee that by using non-shareable resources to the bare minimum. We should use shareable resources as much as possible. Coming back to that example, two processes and two resources.
Deadlock will only occur if R1 and R2 both are mutually exclusive. But if I can somehow manage with shareable resources, then deadlock will not occur, because two processes simultaneously can use that R1 resource or R2 resource, and that will not lead to a deadlock from occurring. So what I can do is, I can use this resource as shareable resource. Read only file, a file that only needs to be read. It can be done by one process, two process, simultaneously it can be done by hundreds of process. A cricket score will not change if hundreds of users are simultaneously viewing it. Just because hundreds of users have logged in, that score is not going to change. So we can use shareable resources. Read only file is one of that resources, memory is another of that resource. So we should use shareable resources as much as possible. If I use unshareable resources or non-shareable resources or mutually exclusive resources, it would push my system towards deadlock. Shareable, non-shareable resources like printer that can only be used by one process at a time, scanner, CD writer, all these devices, all these resources are examples of non-shareable resources. So we should avoid using non-shareable resources as much as possible. If we could achieve that, if we could guarantee that, then deadlock would not enter my system. Attacking the mutual exclusion condition. We are attacking the mutual exclusion condition. The problem with these resources, yeah, this method is that we cannot guarantee that we could always achieve, we could always use non-shareable resources or shareable resources. Suppose a CD writer is needed to burn a CD. We cannot replace it with a mail that I send that document to you and through the mail or through web browser, because we need CD, physical resources. So where CD is required, only CD will work. It cannot be replaced everywhere by sending a mail to someone. So CD writer is, if CD writer is required, we cannot guarantee that it will be replaced by memory stick or memory or read only file. So in some cases we might be are able to remove the deadlock or prevent the deadlock, but in some cases this condition cannot be 100% successfully removed. But all is not lost here, because it is only one condition. Even if we cannot remove this condition, we still have 3 more shots at denying the deadlock from occurring in the system. Let's move to the second condition. The second condition through which the deadlock was occurring in the system was hold and wait condition. Now what I need to do is, I need to attack that hold and wait condition. How can I attack this condition? Hold and wait implied that both the process are holding the resources as well as waiting for some another resources. So this is hold and wait condition. What can we do? We can ensure that no process has to wait for any resources. So how can that be possible? If P1 gets all the resources that it's want, R1, R2, R3, R4, P1 को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, अगर वो उसे मिल जाते हैं, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले तो वो किसका वेट करेगा? किसी का भी नहीं, क्योंकि इसे जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे वो सब उसे एक साथ मिल गए, तो ये कभी भी वेट नहीं करेगा. अगर ये वेट नहीं करेगा तो कभी भी होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन में नहीं जाएगा. कभी भी होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन में जाएगा तो डेडलॉक सिस्टम में कभी नहीं आएगा. तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है, हम डेडलॉक को अगर सिस्टम में आने से रोकना चाहते हैं तो. ठीक है, एग्जांपल से P1 को हमने वो सारे रिसोर्सेज दे दिए जो उसे चाहिए थे, आगे चाहिए या अभी चाहिए, 10 मिनट बाद चाहिए, वो सारे रिसोर्सेज हमने कहा कि तुम्हें पहले ही उसकी रिक्वेस्ट करनी होगी. तो जितने भी रिसोर्सेज थे हम इसको अलोकेट कर दिए. ठीक है, तो ये कभी भी वेट नहीं करेगा, डेडलॉक सिस्टम में नहीं आएगा. ये काफी अच्छा तरीका है डेडलॉक को रोकने का. लेकिन इसका भी एक फ्लिप साइड है, मतलब कहने का कि इसका भी एक डिसएडवांटेज है. अगर मैं इसको सारे रिसोर्सेज वो दे देता हूं जो इसको आगे चल के काम में आने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं चाहिए, तो वो रिसोर्सेज उसको ने अक्वायर तो कर लिए, लेकिन वो रिसोर्सेज को ये अभी यूज नहीं कर पा रहा, तो वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन कम है. रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन है, उनका यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रिसोर्सेज का, क्योंकि हमने इसको वो रिसोर्सेज अलोकेट कर दिए जिसकी जरूरत इसे अभी नहीं है.
शायद 2 दिन बाद पड़े, शायद 2 घंटे बाद पड़े, शायद 2 मिनट बाद पड़े। तो ये सारे रिसोर्सेज हमने इसको जबरदस्ती अलोकेट कर दिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बाद में कुछ मांगे। इससे डेडलॉक तो सिस्टम में नहीं आएगा, लेकिन सीपीयू का या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो गया, और कई केसेस में ये डेडलॉक से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कहने का मतलब है कि मैं 100 रुपए बचाने के लिए हो सकता है कई बार मुझे 110 रुपए भी खर्च करने पड़े, तो ये तो फायदे का सौदा नहीं होगा। हमने एक कंडीशन को बचाने के लिए हमने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास वैसे ही बहुत कम है, रिसोर्सेज की हमेशा ही कमी रहती है। वो रिसोर्सेज हमने एक ऐसे प्रोसेस को अलोकेट कर दिए जिसकी उसको जरूरत नहीं है, और कई सारे दूसरे प्रोसेस हैं जो ये R2 और R3 की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उनको दे नहीं सकते क्योंकि वो हमने इसको अलोकेट कर दिए हैं। तो ये तो एक तरीके से हमने दूसरी मुसीबत मोल ले ली है। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन को हम सक्सेसफुली हटा तो सकते हैं, होल्ड एंड वेट कंडीशन को हम सक्सेसफुली हटा तो सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है इससे काफी कम हो जाता है। गारंटी से अचीव हो जाएगा क्या हमारा डेडलॉक को रोकने का, डेडलॉक को प्रिवेंट करने का जो मोटिव है, हो जाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में गारंटी से हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार हमें प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंटर ही यूज करना पड़ेगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से हम गारंटी से नहीं कह सकते कि हर बार डेडलॉक रोक देंगे हम, लेकिन होल्ड एंड वेट को ब्रेक करके गारंटी से हम कह सकते हैं कि डेडलॉक हर बार ब्रेक हो जाएगा, पर इसकी कॉस्ट जो है वो शायद डेडलॉक से भी ज्यादा हो। चलिए, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 2 मेथड हमने ट्राई किए, एक मेथड से पॉसिबल नहीं है, दूसरे मेथड से पॉसिबल है, लेकिन नुकसान जो है वो उस कंडीशन से भी ज्यादा है जिसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन देखते हैं, नॉन प्रियम्पशन कंडीशन, अटैकिंग द नॉन प्रियम्पशन कंडीशन। नॉन प्रियम्पशन का बताया था मैंने, रिसोर्सेज देने के बाद हम उससे वापस नहीं ले सकते, हम इस कंडीशन को ब्रेक करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब होगा कि प्रिवेंशन हम चाहते हैं, प्रियम्पशन हमारे सिस्टम में आ जाए, नॉन प्रियम्पशन को हम हटाना चाहते हैं। तो इस केस में प्रोसेस अगर किसी R1, R2, R3 रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है, तीनों रिसोर्सेज हमने P1 प्रोसेस को दे दिए, और ये R4 की रिक्वेस्ट करता है, R4 की रिक्वेस्ट करता है जो हमने किसी दूसरे प्रोसेस को उस समय अलोकेट किया हुआ है, और इसकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, वो आगे की बात है। पर ये R4 इसको हम तुरंत अलोकेट नहीं कर पा रहे, तो ये कहा माना जाता है कि क्योंकि ये प्रोसेस अब 3 रिसोर्सेज होल्ड करके रखा हुआ है और चौथा इसको नहीं मिल पा रहा, तो ये अपना एग्जीक्यूशन तो वैसे ही पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कर, चौथा जब हम इसको नहीं दे पा रहे, तो क्यों ना ये 1, 2, 3 भी छोड़ दे, इसका एग्जीक्यूशन तो वैसे ही नहीं होगा। तो इसने क्या किया, 1, 2, 3 को रिलीज कर दिया। तो जो इसके पास दूसरे रिसोर्सेज थे इसने उनको भी रिलीज कर दिया, क्योंकि उसको एक रिसोर्स नहीं मिल पा रहा। ये कंडीशन, इस मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नॉन प्रियम्पशन को उसकी ब्रेक कर रहे हैं, नॉन प्रियम्पशन कंडीशन को। इससे नॉन प्रियम्पशन ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल। क्या इससे डेडलॉक रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि वो वेट करेगा ही नहीं, तो डेडलॉक कभी आने का सवाल ही नहीं है। तो इसका फ्लिप साइड क्या है, फिर हम इसको क्यों नहीं यूज करते? प्रॉब्लम अभी भी वही है, इस रिसोर्स के नहीं मिलने की वजह से इसने तीनों रिसोर्सेज जो इसने बहुत ही मेहनत करके या काफी टाइम से इसको यूज कर रहा है, इसने इन तीनों को रिलीज कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या करना होगा कि R1, R2, R3 वापस अक्वायर करने होंगे, और R4 भी वापस अक्वायर करना होगा। तो इसको वापस उन सारे रिसोर्सेज को अक्वायर करना होगा, उनका यूज करना होगा, और फिर एग्जीक्यूट करना होगा। तो अभी तक इसने जितना भी किया हुआ था प्रोसेस, वो सब उसका फेल हो गया, खराब हो गया, क्योंकि इसने एक रिसोर्स की वजह से पहले के 3 रिसोर्सेज रिलीज कर दिए। कम रिसोर्सेज हो तब तो समझ में आता है, पर कोई एक प्रोसेस है जिसको 20 रिसोर्सेज चाहिए, उनमें से कुछ उसे मिल गए और एक रिसोर्स नहीं मिला, तो जितने भी उसने होल्ड किए हुए थे वो सब उसको रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो P1 जिसकी रिक्वायरमेंट काफी सारे रिसोर्सेज हैं, वो कभी भी अपना एग्जीक्यूशन पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो रहा है, क्योंकि उसको यूज करने के बाद हम उसका पूरा प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे, हम उसको रिलीज कर रहे हैं और बाद में वापस एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, स्टारवेशन भी आने की चांसेस हैं। स्टारवेशन मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक आपको रिसोर्सेज अलोकेट नहीं होते हैं काफी टाइम तक, तो स्टारवेशन आने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं अगर हम नॉन प्रियम्पशन को ब्रेक करते हैं। तो
चलिए तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन पे मूव करते हैं। सर्कुलर वेट कंडीशन में साइकिल नहीं बने, अगर मैं ये इंश्योर कर सकूं तो डेडलॉक सिस्टम में कभी भी नहीं आएगा। साइकिल की वजह से डेडलॉक क्यों आता था? क्योंकि ये एक डेडलॉक का क्लासिकल जैसे एग्जांपल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि साइकिल बन रही है और डेडलॉक आ रहा है। कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ के जब वापस आता है, किसी भी नंबरिंग का सिस्टम का आगे बढ़ के जब वो वापस आता है, तो सिस्टम में डेडलॉक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैं कहूं P1 को जो चाहिए वो R1 के पास है और R1 जो है वो P2 को दिया हुआ है, यहाँ डेडलॉक नहीं है क्योंकि सब कुछ लीनियर वे में है। R1 हमने P2 को दिया हुआ है और R1 P1 की भी रिक्वेस्ट है, तो इस सिस्टम में डेडलॉक नहीं है। होल्ड एंड वेट हो रहा है लेकिन अलग अलग जगह, P2 होल्ड किया हुआ है और P1 वेट कर रहा है। ये हमारी प्रॉब्लम से एकदम अलग है। एक प्रोसेस होल्ड किया हुआ है, दूसरा वेट कर रहा है, तो यहाँ डेडलॉक नहीं है। P1 को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, P2 अपना काम पहले कर लेगा, R1 को रिलीज करेगा और P1 को फिर अलोकेट कर देंगे और ये एग्जीक्यूट कर लेगा। तो जब तक लीनियरली चलता रहेगा सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। सपोज करो P2 R3 की रिक्वेस्ट करता है जो हमने P3 को दिया हुआ है, ये भी डेडलॉक नहीं है क्योंकि सब आगे की तरफ बढ़ रहा है। डेडलॉक कब आ जाता है? जब P3 जो है एक ऐसे रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है जो हमने पहले किसी और को अलोकेट किया हुआ है, तो यहां पे डेडलॉक आ गया। यहां पे डेडलॉक आ गया क्योंकि एक क्लोज साइकिल बन गई, आप देख सकते हैं। तो जब तक हम एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कोई भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जब तक डेडलॉक नहीं था। जैसे ही 4 के बाद वापस 1 आता है तो सिस्टम में डेडलॉक आ जाता है। अब अगर हम इस कंडीशन को ब्रेक करते हैं तो हम चाहते हैं कि सिस्टम में साइकिल ना बने। सिस्टम में साइकिल ना बने तो हम क्या कर सकते हैं कि हर रिसोर्स को हमने नंबर दे दिया। सीडी राइटर जो है, सीडी राइटर जो है उसे हमने 1 नंबर दे दिया, प्रिंटर को हमने 2 नंबर दे दिया, स्कैनर को हमने नंबरिंग कर दी 3। अब फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी कुछ प्रोसेसर्स को ये रिसोर्सेज चाहिए, तो हम क्या अलोकेट कर सकते हैं कि 1 जो है, अगर आपके पास है 1 नंबर का रिसोर्स तो आप 2 और 3 की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 2 रिसोर्स अगर आपके पास है तो आप 3 की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 की नहीं कर सकते। और 3 नंबर का रिसोर्स अगर आपने ले लिया है तो 2 और 1 की नहीं कर सकते। मतलब हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पीछे जैसे ही आते हैं तो हमने देखा है सिस्टम में डेडलॉक आ जाता है। तो अगर किसी प्रोसेस P1 ने 1 R1 रिसोर्स को रिक्वेस्ट की है और वो उसको अलोकेट कर दिया, तो ये R2 और R3 दोनों की रिक्वेस्ट कर सकता है। पर सपोज करो कि P1 को हमने R3 अलोकेट कर दिया, तो अब ये R1 और R2 की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि आगे जाके हम वापस पीछे आने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर इसके पास R3 है तो ये R1 और R2 की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। पर सपोज करो इसको जरूरत पड़े R1 और R2 की, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं कि R3 जो है वो इसे रिलीज करे, जाने दे, R1 को अक्वायर करे, R2 को अक्वायर करे और फिर R3 को वापस अक्वायर करे। तो इस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को ले सकता है और सिस्टम में डेडलॉक भी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि हम फिर वापस आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब तक हम एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तब तक डेडलॉक आने के चांसेस आपके काफी कम हो जाते हैं। तो ये आपके सिस्टम में डेडलॉक क्या था, आज हमने डिस्कस किया कि सिस्टम में डेडलॉक होता क्या है और उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और वीडियोस इसके बारे में देखने हो तो आप चेक कर सकते हैं। एनपीटीईएल के आपको कोई कोर्स करने हो सर्टिफिकेशन के साथ तो आप ये सर्च कर सकते हैं। वीडियोस अगर आपको चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उनका इंट्रोडक्शन है, डेडलॉक है, तो इसको आप देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी हम अगली बार वापस इसको डिस्कस करेंगे। एनपीटीईएल के कोर्स आप देख सकते हैं, कई सारे लेक्चर्स हैं इनके। कोऑर्डिनेटर्स की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन ये कंटेंट डिलीवर करेगा, कोर्सेज आपको देखने हों कौन से पोर्टल पर हैं, तो ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा।